Welcome students. Today we will study second video of nutrition in living organisms, plants. So we have already studied the basics. Now today we have to see the photosynthesis, food making process in plants. So photosynthesis, you can say it is the food making process. Food making process. So photo, you see, photo means sunlight. Synthesis means to make. It's making, combining, to form. Synthesize karna. Synthesize what? Food. So photosynthesis is the process of making food in the presence of sunlight, photo, using carbon dioxide, water. So this you have to study, photosynthesis. The synthesis of food in plants occurs in their leaves. So leaves are called the food factories. Food factories of the plant. अगर leaves food factories हैं तो उस factory का kitchen कहाँ है? Kitchen is the chloroplast. You see, plant cells contains chloroplast. So chloroplast, you can call it as kitchen. Kitchen of the factory. Factory is the leaves. Leaves are called the food factories of the plant. Okay, you can call them, as a lot of food is synthesized there. But actually, it is the chloroplast where the food is synthesized. So chloroplast is a cell organelle present in the plant cells, plant leaf cells. The leaves have a green pigment called chlorophyll. This chlorophyll is present in the chloroplast of leaves. So this chlorophyll helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used by the plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. So let's see here. Again, photolight synthesis to combine as it takes place in the presence of sunlight. So therefore, photo word is used in the photosynthesis. This process can be written in the form of the following equation. This is the equation here. You have also studied it in class 6th. You can see here this carbon dioxide plus water combines to form in the presence of sunlight and chlorophyll to make carbohydrate plus oxygen is released. Carbohydrate here is glucose. Carbon dioxide, you know, it contains elements carbon and oxygen. CO2 is the formula. Water contains hydrogen and oxygen. Formula is H2O.
And glucose, you know, it is C6H12O6 and it contains carbon, hydrogen, oxygen elements. So you can see here the carbon dioxide and oxygen. They are used to make carbohydrate, glucose. Hydrogen is also there, and this hydrogen comes from water. Hydrogen of glucose comes from water. And what about this oxygen? This oxygen, the oxygen of water is released as oxygen. So oxygen that is released to atmosphere during photosynthesis, that comes from the water molecule. So here in photosynthesis, what is happening? The main thing is the formation of carbohydrate, which is glucose, and it can be converted to various other important organic compounds which are important for plants, like proteins and fats. Here in the diagram you can see sunlight is there, that is received by the chlorophyll present in the chloroplast of the leaves. And you can see here CO2 is used, and water and water and minerals, they are taken from the soil. So you can see here water and minerals that goes up, absorbed by the roots, goes up and reaches to the leaves. Carbon dioxide comes from the air, and as a result in photosynthesis you see glucose is formed. Synthesis of glucose. Now you see what is the raw material for photosynthesis. Raw material for photosynthesis, just we have seen now, it is carbon dioxide and water. It is the raw material. From the above equation it is clear that CO2 and water are the raw material. For photosynthesis. For this process, chlorophyll and presence of sunlight are also necessary. Since food is synthesized in leaves, all the raw materials need to reach there. This is important here that you need to understand. You know, carbon dioxide is present in atmosphere, that must reach to the chloroplast of the leaves, and you can see the water and minerals are in the soil, that also must reach to the leaves where photosynthesis is taking place. So therefore now you need to understand how these important raw materials, carbon dioxide and water, reaches to the leaves. Now first we will see water and minerals. Actually water and minerals अभी हमने बात की है, कहाँ से आएगा?
वाटर एंड मिनरल सॉइल से। These are absorbed by the roots from the soil. From here, water and minerals are transported to other parts of the plants by the vessels. Vessels are tubes that run throughout the root, the stem, the branches and the leaves. You will learn more about this in chapter 8. Vessels actually cells हैं। ये जो vessels word दिख रहा है ना, ये सेल्स हैं, जिनको वेसल बोला है क्योंकि अंदर से ये होलो हैं, इसमें पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। दीज आर वेसल्स, सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं। और ये वेसल्स जो हैं ये रूट से लेकर के स्टेम, लीफ का पीटियोल और लीफ के अंदर भी वेसल्स हैं जो कि पानी को क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा लीव्स कंटेन्स वेन्स एंड मिडरिब। ये जो मिडरिब होती है और वेन्स होती हैं लीव्स में, इसके अंदर वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं, जो कि सॉइल से पानी को ऊपर तक लीव्स तक पहुंचा रही है। तो कंटिन्यूटी है, ये ब्रेक नहीं हो रही है। ऐसी वेसल्स, बहुत सारी वेसल्स आपस में जुड़ के एक पूरी एक बड़ा पाइप बन गया है, राइट फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स। ये वेसल्स की लोकेशन आप आइडिया लगा सकते हैं, मिडरिब में और वेन्स में ये वेसल्स हैं। और वेसल्स दे आर द पार्ट ऑफ जाइलम। ये जाइलम का पार्ट है, ये वेसल्स जो है। जाइलम शायद आपने सुना होगा। तो ये जाइलम है, ये सेल्स। जाइलम एक टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसके पार्ट है, उसका सेल है ये वेसल। इस डायग्राम में, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना सामने, दिस डायग्राम, यहाँ तो सॉइल पार्टिकल्स हैं, मिट्टी है, यहाँ सॉइल है। दिस इज द रूट हेयर। रूट हेयर बहुत छोटे होते हैं, इवन कई बार नेकेड आई से दिखते भी नहीं है। रूट हेयर्स बहुत छोटे होंगे। दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। और एक सेक्शन काटा हुआ है ये रूट का, सॉइल, रूट हेयर। ये एपिडर्मल सेल्स हैं, रूट का सरफेस। उसको अंदर काट के देखें तो अंदर ये सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स की स्पेसेस हैं। यहां वेसल्स कहां नजर आ रही हैं? वेसल्स आपको बताएं, ये जो सेल ये दिख रहे हैं ना, ये वेसल्स हैं। यहां ये नहीं है वेसल्स, ये वेसल्स नहीं है। पानी जो है कैसे आ रहा है? वाटर इज कमिंग फ्रॉम सॉइल, एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स, और डायरेक्टली यहां से भी जा सकता है। और यहां से पानी धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहा है और it is reaching to the vessels. ये vessels क्योंकि एक सेक्शन से काटा हुआ है तो आपको ये गोल नजर आ रहा है, अदरवाइज ये एक तरह से एक ट्यूब की तरह है। जैसे आप एक लंबी रिफिल कोई आप काटेंगे तो आपको गोल नजर आएगा ना, बस तो वैसे ही ये गोल सा नजर आ रहा है। और ऊपर लंबाई में है ये सेल्स, जो वेसल्स हैं, और एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इकट्ठे। ये भी वेसल है साथ में, ये भी वेसल्स हैं, है ना? तो वेसल्स जो हैं पानी को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करेंगे, लीव्स तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये कैसे एब्जॉर्ब होगा? प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata, and the stomata are surrounded by special cells called guard cells. तो यहां पर थोड़ा सा लेबलिंग में गड़बड़ है। गार्ड सेल्स जो मुझे दिख रहे हैं यहां पर, गार्ड सेल्स यहां है,
जस्ट वेट, ये गार्ड सेल्स हैं यहां तक, ये यहां गार्ड सेल्स हैं, 2 गार्ड सेल्स दिख रहे हैं। 2 गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, जैसे यहां स्पेस दिख रही है बीच में खाली जगह मुझे, उसको मैं स्टोमेटल पोर उसको बोल सकता हूं। यहां है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर यहां जो दिख रहा है पोर बीच में, ये पोर स्टोमेटल पोर है। इसके आसपास 2 सेल्स हैं, गार्ड शेप के होते हैं, बीन शेप के सेल्स हैं, गार्ड सेल्स। तो यहां मुझे 2 स्टोमेटा दिख रहे हैं यहां पर। अभी जो पीछे वेसल्स की बात की थी हमने, तो यहां पर ये जो बीच में वायलेट कलर का स्ट्रक्चर, पर्पल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर वेसल्स होंगे, जाइलम होता है यहाँ, फ्लोएम यहां पर होते हैं यहां पर, ठीक है। चलो अभी हम वो नहीं बात कर रहे यहाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ऊपर सरफेस दिख रहा है, ये लीफ का टॉप सरफेस है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो यू आर सेइंग द लीफ सरफेस दिख रहा है, और इसमें सेल्स भी दिख रहे हैं। ये दीज आर एपिडर्मल सेल्स, दिस इज अ लीफ सरफेस, you can write it as leaf surface. It is leaf surface, is complete. ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है लीफ का, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल साइज। इस लीफ को काटा हुआ है छोटा सा पोर्शन लेकर के, ये अंदर का पोर्शन दिख रहा है लीफ का सारा, और ये टॉप छोटा सा पोर्शन का इसका सरफेस व्यू है इसका ऊपर का, दिस वन, इसमें सेल्स दिख रहे हैं, यहीं पर स्टोमेटास होते हैं। तो ये नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पे इसको उल्टा करेंगे पूरे को, तो नीचे भी हमें जैसे ऊपर स्ट्रक्चर दिख रहा है, नीचे भी वैसे ही सेम आपको दिखाई देगा। और वहां पर ये सेल्स, वैसे यहाँ आप सेल्स बना सकते हैं, यहाँ स्टोमेटा हो सकता है, यहाँ स्टोमेटा हो सकता है ना। तो ये बाहर एटमॉस्फेयर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स थ्रू दिस स्टोमेटल पोर, और अंदर ये सेल्स दिख रहे हैं कुछ, ये लंबे से पैरेलल साइज के सेल्स हैं, पैलिसेड सेल्स, फिर कुछ ये राउंड शेप के स्पॉन्जी सेल्स हैं, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। वहां तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी जहां फोटोसिंथेसिस होना है। तो यू हैव सीन हियर कि ये कैसे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचे वहां तक जहां पर फोटोसिंथेसिस होनी है। तो सिंपल अगर हमें ध्यान रखना है, तो वाटर एंड मिनरल्स रीचेस टू द लीफ थ्रू वेसल्स ऑफ द जाइलम, और कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस टू द लीफ थ्रू स्टोमेटा. So we'll continue with it in the next video.